So let's study sexual reproduction in flowering plants. The topic is pollen pistil interaction, and then we'll study double fertilization. So pollen pistil interaction, when the pollen is in the air, the pollen lands on the stigma. The pollen lands on the stigma, and this will magnify the stigma at this stage and then study. This pollen is going to land on the stigma, and pollen tube is going to come here. But why the pollen of this particular stigma lands on this? There is a chemistry. There are certain chemicals which are responsible, certain components are responsible, which help in landing of the pollen onto the right stigma. Or even if wrong pollen is here, that will not germinate on this stigma. Means some are compatible with this and some are इनकम्पैटिबल. कंपैटिबल का मतलब जो इसके साथ मैच करता है, और इनकम्पैटिबल का मतलब है विच आर नॉट मैचिंग विद द दिस स्टिग्मा. सो कंपैटिबिलिटी डिपेंड्स कि ये पॉलन कौन सा यहाँ पे आने वाला है. अगर इस स्टिग्मा को माइक्रोस्कोप के नीचे तुम देखोगे, यू कैन जर्मिनेट पॉलन्स on a slide in your class. There is a practical also. So the pollen tubes will come out in a sugar solution. You will keep the pollen. The pollen tubes will come out, and you can see them on your slide. So you must see those pollens coming onto the slide. So sugar solutions help in germination of pollen. Here on this stigma ये compatible है, तभी ये pollen यहाँ पे उग पाया है. अगर ये compatible नहीं होगा, incompatible होगा, कुछ components, कुछ chemicals match नहीं करेंगे, it will not germinate on this pollen. So when this pollen is germinating on this stigma, तो pollen tube is coming out. तो अगर pollen हमने पढ़ा था पहले कि pollen एक generative सेल होता है उसमें, और एक वेजिटेटिव सेल होता है. ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है. ये जनरेटिव न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स. So let's see, these two male gametes are produced when the pollen is germinating. If the pollen is released I told you कि biology एक science of exceptions है. 3 cell stage भी हो सकती है, उस पे भी pollen release हो सकता है. अगर 2 पे है तो यहाँ पे आके वो 3 बन जाएंगे. 2 male gametes यहाँ पे बन जाएंगे. ये 2 male gametes हैं, और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब बनाने में हेल्प करता है. वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, और स्पर्म न्यूक्लियाई मीन्स मेल गैमेट्स, तो वो भी हेल्प करता है. सो मेल गैमेट बन गए. अब ये पॉलन ट्यूब इसमें एंटर कर रही है थ्रू दी स्टाइल. ये देखिए, ये एक पिक्चर है स्पेशली आपको दिखाने के लिए कि पॉलन जब एंटर करते हैं तो किस तरह का ये दिखता है स्टिग्मा. एक फोटोग्राफी से दिखाया गया. ये एक स्लाइड की पिक्चर दिखाई गई है. सो द पॉलन स्टिग्मा के थ्रू पॉलन ट्यूब्स बहुत सारी जा रही हैं. only one is going to fertilize, but here the many pollen tubes are going. अभी साइंटिस्ट को ये पता लग गया है कि पॉलन को स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कराने के लिए प्रोसेस क्या है. सो ये प्रोसेस है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. ये जो पॉलन्स हैं इनको ये फोर्सेप्स की हेल्प से एंथर्स को रिमूव कर लेते हैं. सो अब रिमूव करने के बाद क्या किया, इस अपनी मर्जी का एंड ये पॉलन इसके ऊपर यहाँ डस्ट कर दिया, इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर. और जो फ्लावर है उसकी बैगिंग कर देंगे. बैग मतलब इसके ऊपर एक बैग बांध देंगे, बटर पेपर का बना हुआ जनरली होता है. बैग बांध देंगे तो अब कोई और पॉलन इसके ऊपर नहीं आ सकता. रिमूविंग इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. एंड उसके बाद बैगिंग का मतलब इसके ऊपर एक बैग बांध देना. तो अब अपना डिजायर्ड पॉलन जो है, डिजायर्ड पॉलन इसके ऊपर जर्मिनेट करेगा. तो इस तरीके से अब साइंटिस्ट को पता लग गया है, तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, अपनी मर्जी के प्लांट्स बन जाएंगे.
पोटैटो और टोमेटो को मिला के पोमैटो बन जाएगा, या कई तरह की वेराइटीज बनाने में भी हेल्पफुल है. सो दिस इज artificial hybridization done by the scientists. This is the way. Okay. Now fertilization. Now the pollen tube has reached the let's do pollen tube has reached the ovary. This is the stigma and style. Pollen tube is germinating here and coming through this. Here there is an ovule. एक ही ovule वाला बनाएंगे. ओव्यूल जो तुम्हें मालूम है एनाट्रोपस ही बनाया मैंने. यहाँ पे भी तुम चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो, ऑर्थ्रोट्रोपस भी बना सकते हो. सो दिस इज द माइक्रोपाइल. सो द pollen tube is going to come here through this micropyle. It can come from here also, that is called chelizogamy, from mesogamy, from in between. तो ज्यादातर पॉर यहाँ से आती है. It is called the porogamy coming through the micropyle. तो ये जो दो मेल गैमेट्स लेके आ रही थी और एक वो, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है. थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अभी. ये इसमें माइक्रोपाइलर एंड पे देयर इज एन एग, two surrounding synergids. Here there are two polar nuclei and here there are three antipodals. ये तीन एंटीपोडल्स हैं. क्लियर. सो ये जो एग है सेंटर में, इसका न्यूक्लियस ये एग सेल है. पोलर न्यूक्लियाई हो या सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये यहाँ सेंटर में होगा. सो पोलन ट्यूब यहाँ से पहुंच गई दो मेल गैमेट्स लेके. दो मेल गैमेट्स, सॉरी ये मेल गैमेट्स आ गए. नाउ यहाँ पे देयर इज अ फिंगर लाइक filiform apparatus. It's called filiform apparatus. So filiform apparatus के synergids के filiform apparatus से male gametes are going to enter. तो यहाँ से enter करेंगे. Okay. Later on ये synergids वगैरह disappear हो जाएंगे and one of the male gamete will fertilize this egg. Okay. Result will be a zygote. One of the male gamete will fertilize the egg to produce the zygote. Okay. So this is called fertilization. Okay. Now fertilization, after fertilization what is going to happen? The synergids will disappear, zygote will be produced. Now what happens to the second male gamete? One male gamete fertilizes the egg. What happens to the second gamete, male gamete? Now you know there are two in the embryo sac. There were two polar nuclei here in the center. These two are haploid. Okay. So one of the male gamete will fuse with these two and result in the formation of a triploid cell. That triploid cell is called the primary endosperm nucleus. That nucleus will be produced, that is primary endosperm nucleus. So what will be the function of this? To produce the endosperm. Endosperm क्या होता है? The nutritive tissue. नारियल खाते हो ना तुम, एंडोस्पर्म होता है वो. उसका पानी भी एंडोस्पर्म है और वो दोनों. तो वो एंडोस्पर्म कुदरत ने एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए उसके अंदर फूड का इंतजाम करके रखा हुआ है. क्लियर. तो एंडोस्पर्म उस इन दो हैप्लॉइड और एक मेल गैमीट के प्रोडक्शन से होगा. दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन. सो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? Fusion of two polar nuclei and one male gamete. That is called triple fusion. Okay. So एग्जाम में कई बार आ जाता है, हाउ डज एंडोस्पर्म गेट ट्रिप्लॉइड. सो आंसर आप लोगों को मालूम हो गया कि ट्रिप्लॉइड कैसे हो जाता है. और
जो एग से बना है वो जाइगोट जो बन जाता है, जाइगोट जो है उसकी फॉर्मेशन मेल गैमीट और एग की फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी. So syngamy is fusion of male and female gamete, and triple fusion is fusion of two polar nuclei and one of the male gamete. So this is, since दो fertilization हो रही हैं, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की और एक उसकी, तो क्या हो गई है double fertilization. So double fertilization is formation of an primary endosperm nucleus and formation of a zygote. So ये दो आपके process complete होते हैं. So this is all about today's class. So today's video was about this pre-fertilization and fertilization. Now we will study the next, in the next video we will study the post-fertilization changes in the angiospermic flowers life, angiospermic plants life. Thank you very much. Please subscribe and share video with the students of class 12. um, I have uploaded more than 26-7 videos, and the link to the chapter, this chapter and the previous chapter, we will give, I will give in the description box. So thank you very much.